Let's get going with the session today. So today's session is the data interpretation session. So today we had a test on DI, and again, as expected, fewer of you have taken this test today because people in general are scared of DI, and that's why maybe the attendance was a bit low. But then again, if you don't practice, then you might not really get very good at DI as well because a lot of DI and LR comes with practice. There is no syllabus as such. In fact, I wanted to make a video on the DILR syllabus, but honestly, I couldn't make anything because there isn't any syllabus for DILR. There are just building blocks that exist. तो अगर वो बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर ठीक से कर लोगे, अगर बहुत सारे पजल टाइप्स पता है, अगर पजल देखने के बाद सबसे पहला इंस्टिंक्ट वहां से दूर भागने का नहीं होता, then I think you are more or less doing well when it comes to DILR, and that is basically what is going to help you as well, right? Hi young entrepreneurs, I am Bangalore. Yeah. That's basically what we will try to do. तो आगे जाके भी जो भी DILR sets आएंगे, we will try to remove that fear from your head when it comes to DILR, because it's all about getting over your fear. If you are very confident going into a test that you are going to be able to solve that one set, that is more or less good enough for you, right? तो उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, then it will always be an issue and you will always struggle with DILR at a conceptual level, and वो हमेशा वो डर लगा रहेगा. And once it becomes so debilitating that you are not able to even attempt a particular test or the section, it will be disastrous. Yeah. Hi Gaurav, good evening. ठीक है. Let's try to see if we are able to get over that fear when it comes to the DILR section. Now I'm assuming that you have seen the test already. For those of you who have recently joined us for this particular series, this is called daily drill, in which every day we will be floating a test on our portal, and in the evening I will come and discuss the solutions with you. So we have been doing it for the last 2 days now. This is our third day. If you enroll for the course, it's a free course. The entire thing is going to be free for all of you. You just have to sign up using your mail ID slash phone number, and you will be able to see all the tests that are there. But if you have to take a test, you will have to confirm your email. So you'll get a confirmation link in your mailbox as soon as you sign up. उस पे एक बार क्लिक करेंगे तो you will be able to access the tests. Otherwise the tests might not be accessible to you. So make sure that you do that. That is the first thing. Second thing, have a look at the sets. Hi Monish, have a look at the sets. Have a look at the questions that are there. Try to solve it on your own under the presence of that timer. अगर वो timer में solve नहीं होता तो even after the test is done, you can solve those questions, and then we will discuss these questions in the evening for in these live sessions, right? And I have also been updating the videos in the explanations for the sessions that we have already done. So in case you haven't taken those tests, एक बार वो tests दे देना, and you will be able to see those solutions as well nicely. ठीक है. Now आज के जो दो sets हैं हमारे पास, those are CAT 2017 slot 1, I believe. Yeah, so those sets are from that slot. I had taken the test in that slot in 2017, and if you compare it with the afternoon slot questions, these questions were a lot more ambiguously worded, right? So even when I was coming up with the solutions for today's session, uh, थोड़ा ambiguity तो था. मतलब I was not entirely happy with the kind of language that was used. Not that anything is missing or anything is wrong, but इतना confusing हो जाता है ना at some points in time that it becomes irritating, right? So it was sort of an irritating DILR section, so to say. One of the most annoying DILR sections that I have appeared for in the last few years now. तो काफी ज्यादा annoying था. Because one set that we are going to do will have a lot of possibilities that are there. So healthy bites wala, for those of you who have done it, the healthy bite set will have a lot of possibilities. There is no way for you to be certain कि यही मेरा आंसर है करके. सेकेंड सेट के अंदर यू विल बी सर्टन दैट यू विल हैव अ पर्टिकुलर आंसर. तो मुझे पता है कि यही मेरा आंसर है एंड दिस इज राइट. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल योर आंसर इज 125 एंड 125 इज अमंग द ऑप्शंस, एंड बाकी सारे ऑप्शंस आर 75, 100, 150, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं. यू नो दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड 125 इज द राइट आंसर मोर और लेस. ठीक है. बट अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए जहां पे यू नो व्हाट इज द राइट आंसर बट द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी ऑफ. So in that particular case, in the second set that we are going to look at today, uh, mothers, so the data is given of children, and then you have been told something about mothers, and some of these mothers went to a primary school, some of these mothers did not go to a primary school, and then you don't know whether the mother did not go to the primary school or the child did not go to the primary school, क्योंकि children केस में भी एक दिया हुआ है जहां पे people have not attended school at. ठीक है. So these kind of things happened in that particular slot, and that's why it was especially annoying, the sets that we are going to do today. And but again, honestly speaking, these were
two of the sets that you should have done. In fact, these two were the sets of set 1 and set 2 in my particular system. And I did the primary school set at the very beginning. I was able to crack it. I was very happy about it. But उसके बाद the second set was healthy bites, and I struggled with healthy bites because it was very annoying and it is so obvious ना. ऐसा लगेगा कि यही आंसर है करके, राइट? बट देन अगेन यू विल बी डाउटिंग योरसेल्फ, कहीं पे कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, बिकॉज़ सच एन ईज़ी सेट विद सच लेस डेटा, इसके अंदर अगर गड़बड़ कर दिया तो यू विल बी इन बिग ट्रबल, राइट? सो दैट इज मोर और लेस द साइकोलॉजी विद व्हिच यू विल बी फेसिंग these two sets. So let's get going and let's try to see the solutions of these two sets, and I hope you are able to uh, understand these solutions and you are able to solve it more with more clarity the next time you come across some kind of sets like these. ठीक है? So the usual drill, I just show you the set and you can solve along जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो I'll go a bit slower and we will solve the set together more or less, and those of you who have done it, just sit back, relax and try to compare notes कि आपने जो किया था और मैं जो करने वाला हूँ वो दोनों में कितनी सिमिलरिटी है. If there is something else, some better solution that you can think of, एक बार बता देना. I will definitely share it with the group here as well. ठीक है? So let's get going. Let's start with the first set. तो बहुत ही बेसिक सा सेट है, समथिंग दैट ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड. तो जो भी हम क्विक फूड या क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या फिर फास्ट फूड सेंटर्स पे जाते हैं, दिस इज अ वेरी रिलेटेबल सिनेरियो देयर. ठीक है? तो बेसिकली हम वहां पे जाते हैं, एक लाइन लगी होती है, देयर इज कस्टमर 1, देयर इज कस्टमर 2, देयर इज कस्टमर 3. बहुत बार ऐसे होता है कि कस्टमर 1 का ऑर्डर पूरा खत्म होने के बाद ही कस्टमर 2 का ऑर्डर लिया जाएगा, एंड कस्टमर 2 का ऑर्डर खत्म होने के बाद ही कस्टमर 3 का ऑर्डर लिया जाएगा. ठीक है? सो दैट इज समथिंग दैट वर्क्स यूजुअली. ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू ऑप्टिमाइज थिंग्स, वन पर्सन कैन वर्क ऑन टू ऑर्डर्स साइमल्टेनियसली. तो एक जगह पे इफ यू आर डूइंग समथिंग, यू विल बेसिकली वांट टू डू समथिंग एल्स इन दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन इफ दैट थिंग इज ऑन ऑटो पायलट. तो यहाँ पे इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट, सो टू से. Healthy Bites is a fast food joint serving three items. So burger, fries and ice cream. तो तीन आइटम वहां पे मिलते हैं, burgers, fries and ice cream. It has two employees, Anish and Bani. तो दो employees हैं Anish Bani, who prepare the items ordered by the clients. Preparation time is 10 minutes for a burger. Now this thing you have to remember. Preparation time is 10 minutes for a burger, 2 minutes for an order of ice cream. ठीक है? So एक burger बनाने के लिए someone is actually working on this particular thing. It takes 10 minutes to manufacture a burger and 2 minutes to manufacture an ice cream. तो जो भी है उसको swirl करना है, softy बनाना है, whatever उसको toppings डालना है, जो भी करना है. It takes 2 minutes for an order of ice cream. Now an employee can prepare only one of these items at a time. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, one of these items at a time can be prepared. अब this is very 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 important, right? प्रिपरेशन, यहाँ पे प्रिपरेशन किस चीज का हो रहा है? बर्गर का हो रहा है, आइसक्रीम का हो रहा है, तो दैट इज वेयर प्रिपरेशन टाइम इज नीडेड. The fries are prepared in an automatic fryer. तो beyond these, जहाँ पे human intervention is involved while preparing the item, the fries are prepared in an automatic fryer which can prepare up to 3 portion of fries at a time and takes 5 minutes irrespective of the number of portions. तो अगर मैंने एक पोर्शन फ्राइज डाले तो भी 5 मिनट्स लगेंगे, दो पोर्शन फ्राइज डाले तो भी 5 मिनट्स लगेंगे, 3 portion इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्राइज दैट आई कैन पुट इन दिस फ्रायर, एंड वहां पे भी मुझे 5 मिनट्स ही लगेंगे. इफ आई हैव 4 portions टू प्रिपेयर, देन आई विल हैव टू वेट. 3 portion हो जाएंगे, फिर एक पोर्शन कर सकते हैं, या तो टू टू करके कर सकते हैं, राइट? बट इट विल टेक 5 minutes फॉर अप टू 3 portions, एंड दिस इज एन ऑटोमेटिक फ्रायर जहां पे मैनुअल इंटरवेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड. सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ है, the fryer does not need an employee to constantly attend to it, and we can ignore the time taken by employee to start and stop the fryer. Thus an employee can be engaged in preparing other items when frying is on. तो जब फ्रायर चालू होगा उस टाइम पे the employee can do something else. उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का, फ्राइज निकालने का, ये सब टाइम इज नेग्लिजिबल. ठीक है? तो we can ignore that part. However, fries cannot be prepared in anticipation of future orders. Now, just because it is on autopilot and मुझे पता है कि भाई उसमें इंटरवेंशन नहीं लगने वाला है, अगेन देयर कुड बी अ थॉट ना, लॉजिक हो सकता है इसके अंदर कि मैंने फ्राइज डाल के रख दिए वहां पे, एंड दे आर गेटिंग फ्राइड ऑल द टाइम, एंड जैसे जैसे लोग आएंगे मैं फ्राइज निकाल के देता रहूंगा, राइट? बट दैट इज नॉट अलाउड. यू हैव टू क्रिएट एन ऑर्डर और यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑर्डर वंस यू गेट द ऑर्डर. उसके पहले प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते. ठीक है? So it is not a very efficient setup. In fact, you will see that there are only 3 customers that are there. So again, not a very efficient setup as such. In terms of Healthy Bites wishes to serve the orders as early as is possible. The individual items in any order are served as and when ready. However, the order is considered to be completely served only when all the items of that order are served. ठीक है? तो कोई भी ऑर्डर में उसे सर्व कर सकते हैं, मतलब सर्व करना मतलब देना. ठीक है? So I can basically give the order. जैसे बर्गर खत्म हो जाएगा, I can be like, सर आप ये बर्गर ले लो, and you have
फ्राइज हो जाएंगे, सर ये फ्राइज भी ले लो, यू आर डन विद इट। आइसक्रीम हो गया, सर अभी आइसक्रीम ले लो, यू स्टार्ट ईटिंग दिस आइसक्रीम। ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो वी आर अज्यूमिंग दैट द कस्टमर्स आर आल्सो नॉट वेरी फिनिकी अबाउट द ऑर्डर इन व्हिच द ऑर्डर इज डिलीवर्ड। तो हम बोलते हैं ना, पहले स्टार्टर्स लेके आइए, उसके बाद मेन कोर्स लेके आ जाइए, एंड देन डेजर्ट लेके आ जाइए। तो यहाँ पे ऐसा कोई फ्रिल्स नहीं है। अगर आइसक्रीम हो गया तो पहले आइसक्रीम भी खा सकते हैं, राइट? सो इट्स बेसिकली ट्राइंग टू टेल अस दैट। फाइन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली क्या होता है ना, व्हेन वी रीड अ सेट वी रीड इट वेरी फास्ट, we do not really pay attention to the sentences that are there, and then we end up messing the entire thing, right? तो यहाँ पे mess up नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे perfectly बताया गया कि एक employee can prepare these orders, and preparation fries का automatic fryer में होता है। So employee is not involved in the preparation of fries, and this is going to be very important in the last question of this particular set। ठीक है। Now, the table below gives the orders of the three clients and the times at which they have placed their orders. तो first client आता है 10 o'clock को, उसका order है 1 burger, 3 portion fries and 1 order of ice cream। ये 3 item चाहिए। Second customer comes, client comes at 10:05, 5 minutes past 10, उसका order है 1 fries and 1 ice cream, that's it। Third customer comes at 10:07, उसको चाहिए 1 burger and 1 fries। ठीक है। So very straightforward orders, कुछ बहुत extra amazing order कुछ नहीं है, यही है order जो दिया हुआ है। Now let's look at the questions, क्योंकि यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, right? So these kind of questions are something that I generally like to call critical path. So this is not exactly a critical path question, but this is sort of a critical path because there are multiple ways to do things, और उसमें से कोई तो एक तरीका होगा जो सबसे efficient होगा, जो सबसे बेटर होगा, राइट? दोस काइंड ऑफ पाथ्स वी हैव टू फिगर आउट, एंड उसको करने में कितना टाइम लगता है, या फिर हाउ कैन वी इंप्रूव एफिशिएंसी, हाउ कैन वी सेटिस्फाई एज मेनी कस्टमर्स और क्लाइंट्स एज वी कैन, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो दिस इज आइडियली क्रिटिकल पाथ वाला क्वेश्चन। अब क्रिटिकल पाथ क्वेश्चंस के अंदर यू कैन नॉट रियली प्रीएम्प्ट की क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो जब मैं क्वेश्चन देखूंगा उसके बाद ही मैं डेटा पे जाके उसका कोई सेंस बना सकती हूँ। ठीक है। सो नाउ दैट वी हैव मेड सेंस ऑफ द डेटा, लेट्स गेट गोइंग विद द क्वेश्चंस डायरेक्टली, because हर एक क्वेश्चन के अंदर there are some assumptions, there is an if statement kind of an involved, right? So if one client's order can be processed at a given point in time, any given point in time, तो सबसे जल्दी client one का order कब होगा, right? So if then वाले questions, even if you look at the second question, if these things happen then client three कब serve होगा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर if suppose, ये सारी चीजें जो होती है ना वो कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं। तो इफ दिस थिंग हैपेंस देन क्लाइंट टू का ऑर्डर कब सर्व होगा। एंड लास्ट वाला, इफ ये सारी चीजें आर देयर देन फॉर हाउ मेनी मिनट्स इज एग्जैक्टली वन ऑफ द एम्प्लॉइज आइडल। तो ये सब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्वेश्चंस आर ट्राइंग टू आस्क। ठीक है। Now let's get going with the first question. So assume that only one client's order can be processed at any given point in time. So Anish or Bani can't start preparing a new order while a previous order is being prepared. तो order serve करना is different and order complete होना is different. According to the question, when is the order completed? The order is complete on this will be completely served only when all the items of the order are served. तो जब तक वो सब खत्म नहीं होता तब तक order complete नहीं होगा। A person can't work on something else. Now we have to figure out client one का order कितने time में serve होगा। So there is one burger that this client has ordered, one batch of fries that this client has ordered, and one ice cream that this client has ordered. अब यहाँ पे मेरे पास अनीश है एंड मेरे पास बानी है, दो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस पर्सन हैज कम एट 10 o'clock। अब क्या होगा, एज सुन एज दिस कस्टमर कम्स एंड सेज मेरे को एक बर्गर चाहिए, एक फ्राइज चाहिए, एक आइसक्रीम चाहिए, वन पर्सन कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द बर्गर डायरेक्टली, क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन यूनिट है। तो लेट्स से अनीश स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द बर्गर और बानी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द बर्गर, जैसे भी उनका अंडरस्टैंडिंग है। नाउ वन पर्सन स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द बर्गर, सेकंड पर्सन क्या करेगा, अब वो तो फ्री नहीं बैठ सकती बानी, तो बानी क्या करेगी, बानी विल से दैट चलो मैं एक बैच फ्राइज का लगा देती हूँ। तो फ्राइज को तो मैंने ऑटोमेटिक फ्रायर में डाल दिया, एंड नाउ आई एम फ्री बेसिकली, नाउ आई कैन डू सम वर्क ऑन समथिंग एल्स। देन व्हाट आई विल डू इज साइमल्टेनियसली आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द आइसक्रीम। ठीक है। तो मैंने फ्राइज को फ्रायर में डाल दिया, एंड आइसक्रीम इज बेसिकली व्हाट आई एम वर्किंग ऑन एट दिस पॉइंट इन टाइम। नाउ ये बर्गर कब तक बन जाएगा, इसका अनीश का बर्गर कब तक बन जाएगा, अ बर्गर टेक्स 10 मिनट्स टू डिलीवर। तो 10:10 को इसका बर्गर खत्म हो गया होगा। अब आइसक्रीम कब होगा, आइसक्रीम टेक्स 2 मिनट्स टू डिलीवर। तो 10:02 को व्हाट बानी विल डू इज, बानी विल बी लाइक सर आपका ये आइसक्रीम हो गया, आप ये आइसक्रीम ले लीजिए। देन दिस पर्सन विल टेक दैट आइसक्रीम एंड गो अवे। 10:05 को उसके फ्राइज खत्म हो जाएंगे, शी विल बी लाइक आप ये फ्राइज ले लीजिए, आपका काम खत्म हो गया। ठीक है। तो फ्राइज एंड आइसक्रीम हैज बीन डन कंप्लीटली, बट बर्गर वाला ऑर्डर पेंडिंग है। तो बर्गर का ऑर्डर जब डिलीवर होगा ओनली देन विल वी से दैट द ऑर्डर विल बी कंप्लीटली सर्व। तो सबसे लास्ट कौन सा आइटम खत्म हो रहा है, बर्गर खत्म हो रहा है, और वो कब खत्म हो रहा है, 10:10 को खत्म हो रहा है। सो वी विल डेफिनेटली बी एबल टू से दैट 10:10 इज द अर्लीस्ट व्हेन क्लाइंट वन विल बी कंप्लीटली सर्व।
तो बहुत ही बेसिक, दिस इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो भी यू शुड हैव गॉट 3 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर श्योर। ठीक है, सो दैट वाज बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन। If there are any doubts, something you are not understood, please put it in the chat and I'll try to explain it to you again. But I'm assuming ये वाले क्वेश्चन के अंदर कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस क्वेश्चन राइट, सो आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट दिस पर्टिकुलर। ठीक है, all right, so we'll move on to the next question now. Now we have an assumption that has been given to us. Assume that same cheese here, only one client का order can be processed at any given point in time. So Anish और Bani cannot start preparing a new order while a previous order is being processed. ठीक है, तो A और B दोनों भी कोई भी order पूरा खत्म होने तक हम दूसरे order पे काम नहीं कर सकते। Now let's say Anish is here and Bani is here, right? So two people are doing it. Again यहाँ पे client 3 का order करना है, तो client 3 जो है ना उसका client 1 का order आएगा, फिर client 2 का order आएगा और फिर ही client 3 का order आएगा। Now client 1 as we saw, क्या order था उसका? उसका order was 1 burger, 1 fries and 1 ice cream. अब यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं? Because in the previous question we more or less figured out that burger can be done by Anish and fries and ice cream can be done by Bani. वो एक साथ ही हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे दे कैन नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू ऑर्डर व्हाइल अ प्रीवियस ऑर्डर इज गेटिंग प्रिपेयर। अब ये वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, इसका बर्गर जो है वो 10-10 को खत्म हो जाएगा। सो 10-10 इज बेसिकली व्हेन द फर्स्ट पर्सन विल बी कंप्लीटली सर्व। अब उसके बाद ही न्यू ऑर्डर आएगा। ठीक है, सो एट 10-10 ऑल्दो बानी इज फ्री फॉर वट एवर अमाउंट ऑफ टाइम, 10-5 के बाद 10-2 के बाद तो वो फ्री थी, 10-5 को उसने फ्राइज सर्व कर दिए, उसके बाद तो बानी फ्री है। बट अनीश और बानी कैन नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू ऑर्डर व्हाइल अ प्रीवियस ऑर्डर इज बीइंग प्रिपेयर्ड। सो लेट्स से दैट दिस इज आल्सो ट्रू इन दिस केस। फिर क्या होगा, सेकेंड क्लाइंट का ऑर्डर क्या है, 1 पोर्शन फ्राइज एंड 1 ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम। सो 1 फ्राइज एंड 1 आइसक्रीम इज देयर। अब 1 फ्राइज एंड 1 आइसक्रीम जो सेकेंड क्लाइंट आएगा, तो let's say for example 10-10 को both of them are done. Now this person say let's starts working on fries and this person starts working on the ice cream, let's say for example. अब इसका आइसक्रीम जो है ना वो तो 2 मिनट में हो जाएगा 10-12 को, बट इसके फ्राइज बनने में 10-15 हो जाएगा, 5 मिनट्स लगेंगे टू मेक फ्राइज एंड 10-15 इज व्हेन दीज फ्राइज विल बी सर्व्ड। सो द सेकेंड क्लाइंट विल बी कंप्लीटली सर्व्ड एट 10-15। अब बचा मेरे पास थर्ड क्लाइंट। थर्ड क्लाइंट क्या कर रहा है, 1 बर्गर एंड 1 पोर्शन ऑफ फ्राइज लेने वाला है। ठीक है, सो थर्ड क्लाइंट इज गोइंग टू टेक 1 बर्गर एंड 1 पोर्शन ऑफ फ्राइज। आई शुड हैव रिटन हियर। So 10-15 is when 1 fries and 1 ice cream will be served। ठीक है, 10-15 को हो जाएगा। अभी इसको क्या चाहिए, 1 बर्गर दिस पर्सन वांट्स एंड 1 फ्राइज दिस पर्सन वांट्स। तो 1 पर्सन कैन वर्क ऑन द बर्गर, 1 पर्सन कैन वर्क ऑन द फ्राइज। तो बर्गर पे जो काम करने वाला है या काम करने वाली है अनीश, लेट्स से ही वर्क्स ऑन द बर्गर, ही विल टेक 10 मिनट्स। तो 10:25 को उसका बर्गर बना के हो जाएगा। और फ्राइज भले ही जल्दी हो गए हैं, 10:20 को ही फ्राइज बना के हो गए, बट द ऑर्डर विल नॉट बी कंप्लीटली सर्व्ड टिल द टाइम ऑल द आइटम्स हैव बीन डिलीवर्ड। ये दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे ये बर्गर पूरा का पूरा डिलीवर करने के लिए 10:25 बच जाएंगे एंड दैट इज बेसिकली व्हेन द क्लाइंट विल बी सर्व्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे वन थिंग इज देयर दैट कैन स्लाइटली कंफ्यूज यू। अनीश और बानी कैन नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू ऑर्डर व्हाइल अ प्रीवियस ऑर्डर इज बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब इसको दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। वन इज, लेट्स से यू आर सेइंग दैट भाई बानी ने तो फ्राइज और आइसक्रीम बना दी थी, तो उसका जो ऑर्डर था टू मेक फ्राइज और आइसक्रीम दैट हैज बीन डन। अब सामने क्लाइंट खड़ा है, तो फिर दैट क्लाइंट नीड्स टू बी सर्व डायरेक्टली ना। सो बानी कैन डायरेक्टली स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट फ्राइज और आइसक्रीम इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग आइडल, ये हो सकता है। बट देन यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अज्यूम दैट ओनली वन क्लाइंट्स ऑर्डर कैन बी प्रोसेस्ड एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। तो दोनों मिला के एक ही क्लाइंट के ऑर्डर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट पर्सन हु केम, उसका ऑर्डर जब तक खत्म नहीं होता ना तब तक बानी कैन नॉट स्टार्ट वर्किंग ऑन एनी अदर क्लाइंट्स ऑर्डर। तो वो क्लाइंट का ऑर्डर खत्म हो जाएगा तभी ही बानी विल बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू। अब ये अगर मुझे समझ में आ जाता है ना, तो देयर वाज एन इजियर वे टू सॉल्व दिस। अब ये क्रिटिकल पाथ क्वेश्चंस के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ बॉटलनेक दैट यू हैव टू रिमेंबर। बॉटलनेक वो होता है जहां पे बहुत सारे लोग अटक जाते हैं या फिर बहुत सारे सिचुएशंस आके अटक जाते हैं एंड उसके बाद जाने के लिए दे हैव टू पास द फिल्टर। सो इन दिस पर्टिकुलर केस द ऑर्डर दैट टेक्स द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम विल बेसिकली बी माय बॉटलनेक। ठीक है, तो जिसपे सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है उसकी वजह से दीज पीपल आर नॉट एबल टू वर्क ऑन द नेक्स्ट ऑर्डर, राइट। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर लुकिंग एट इन दिस पर्टिकुलर केस इज बर्गर। तो पहले क्लाइंट का सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है, बर्गर है।
इन अदर वर्ड्स एज वेल बर्गर ही सबसे बड़ा ऑर्डर है ना। तो फर्स्ट क्लाइंट का सबसे बड़ा ऑर्डर इज बर्गर, सो 10 मिनट्स लगेंगे। सेकंड क्लाइंट का सबसे बड़ा ऑर्डर इज फ्राइज, उसमें 5 मिनट लगेंगे। एंड थर्ड क्लाइंट का सबसे बड़ा ऑर्डर इज अगेन बर्गर, उसमें 10 मिनट लगेंगे। एंड बिकॉज दी सेकेंड क्लाइंट इज कमिंग 10:05 को ही आके वो बैठ रहा है, तो 10:10 को उसको सर्व कर सकते हैं। एंड थर्ड क्लाइंट 10:07 को ही आके बैठ रहा है, तो 10:15 को उसको सर्व कर सकते हैं। सो 10:25 will basically be my answer, only depending on the largest or the item that takes the longest for me to prepare. राइट, तो इससे अपने को 10:25 मिल जाएगा। अगेन दिस वाज अ स्लाइटली ट्विस्टेड क्वेश्चन, बट कुड हैव बीन मैनेज्ड अगर आप ठीक से पढ़ते तो। ठीक है, सो डीआई में इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड द क्वेश्चंस वेल, अदरवाइज यू विल बी इन बिग ट्रबल। Right. Let's look at the third question now. And कुछ भी अगर doubt, again I'm reiterating, if there is any doubt, anything you have not understood, please put it in the chat. I'll be more than happy to explain it to you again or try to explain it to you in a different manner, so that you get the solution. ठीक है? Let's look at the third question now. Suppose the employees are allowed to process multiple orders at a time. तो multiple orders अभी allow कर दिए हैं. Now the restaurant has realized कि भाई मतलब ऐसे टाइम पास करके नहीं चलेगा. Let's process multiple orders at a time. तो मतलब क्या हो रहा है, अगर एक क्लाइंट का ऑर्डर पे कोई एक काम कर रहा है ना, तो दूसरा इंसान वो दूसरे क्लाइंट के ऑर्डर पे काम कर सकता है या काम कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नाउ एट व्हाट टाइम इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय क्लाइंट टू कंप्लीटली सर्व। तो अभी एक बार क्लाइंट वन का लिख लेते हैं। क्लाइंट वन वाज वन बर्गर, वन फ्राइज, वन आइसक्रीम। and client 2 who came at, this guy came at 10, this person came at 10:05, client 2 का order was one fries and one ice cream if I remember correctly। ठीक है, तो ये ऑर्डर था। अभी मतलब अनीश और बानी जो है ना, वो एक साथ ऑर्डर पे काम कर सकते हैं, अलग अलग ऑर्डर्स पे काम कर सकते हैं। अगेन लेट्स से दैट एट 10 o'clock अनीश स्टार्ट्स वर्किंग ऑन दी बर्गर एंड बानी स्टार्ट्स वर्किंग ऑन दी आइसक्रीम, एंड वो एक बैच फ्राइज को फ्रायर में डाल देती। नाउ एट व्हाट टाइम विल बानी बी एबल टू फिनिश दिस एंटायर थिंग। तो बानी का आइसक्रीम जो है ना, वो 10:02 को बन जाएगा पूरा का पूरा, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। 10:02 को शी वुड हैव मैन्युफैक्चर्ड द एंटायर आइसक्रीम। ठीक है, फ्राइज बनने में 10:05 हो जाएंगे। अभी 10:02 को बानी विल बी फ्री, आइसक्रीम बन गया, दे दिया, पर बानी इज वेटिंग, बट वहां पे क्लाइंट ही नहीं है। तो व्हाट विल बानी डू? बानी विल बेसिकली वेट टिल द नेक्स्ट क्लाइंट कम्स, तब तक वो कुछ नहीं करेगी। अभी 10:05 को दो चीजें हो रही है। बानी का एक तो फ्राइज खत्म हो रहा है, और दूसरा क्लाइंट आके वहां पे ऑर्डर प्लेस कर रहा है। ठीक है, सो नाउ बानी इज फ्री एट 10:05 बिकॉज बानी हैज डिलीवर्ड द फ्राइज, एंड बानी इज नाउ सर्विंग क्लाइंट 2। अब क्लाइंट 2 के पास एक फ्राइज का ऑर्डर है और एक आइसक्रीम का ऑर्डर है। तो बानी का फ्रायर फ्री है अभी, बिकॉज 10:05 तक फ्रायर हैज बीन टेकन केयर ऑफ। तो बानी के पास एक फ्राइज और एक आइसक्रीम का फिर से ऑर्डर आ जाता है। 10:07 को बानी वुड हैव सर्व्ड आइसक्रीम, एंड 10:10 को बानी वुड हैव सर्व्ड फ्राइज, क्योंकि 10:05 टू 10:10 5 मिनट में फ्राइज का एक बैच तो बन जाएगा। राइट, एंड दैट्स व्हाई बानी विल बी एबल टू सर्व दिस एंटायर ऑर्डर बाय 10:10। ठीक है, तो 10:10 तक बानी वुड हैव बीन एबल टू सर्व दिस एंटायर ऑर्डर। क्लाइंट 2 का ऑर्डर कंप्लीटली सर्व हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, so again if there is something that you not understood, please let me know। Again, this is an easier version of the question, the difficult version will be the last question, but third question is manageable in this particular context। Fine। So that was basically the third question of this particular set। Now let's look at the last question। इसमें थोड़ा सा data from here we will need। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि again the employees are allowed to process multiple orders at a time, but the preference will be to finish orders of clients who placed their orders earlier। Also assume that the fourth client came in only at 10:35। ठीक है, fourth client came at 10:35। Between 10 and 10:30 how many, for how many minutes is exactly one of the employees idle? That is the question। ठीक है, एग्जैक्टली वन एम्प्लॉय आइडल होना चाहिए, तो वो कितने मिनट्स के लिए एग्जैक्टली वन एम्प्लॉय आइडल है। सो वी कैन डू वन थिंग हियर, वी कैन बेसिकली डू अ गैंट चार्ट काइंड ऑफ अ थिंग। ए और बी को दोनों को मार्क कर देंगे, एंड वी कैन एंटायरली लुक एट द शेड्यूल फ्रॉम 10 till 10:30, ऐसे कुछ करके देख सकते हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू इट मेंटली, बट अगेन इफ यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट यूजिंग अ गैंट चार्ट। Now, this is something that you will be looking at a lot during your MBA. So, Gantt chart इसको याद रख लेना, ठीक है? Even after your MBA for that matter. So 10 to 10:30. Let's see what happens. अभी 10 को अनीश ने बर्गर बनाना चालू कर दिया, तो till 10:10 this guy is making और प्रिपेयरिंग अ बर्गर, तो उसके पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, टिल 10:10 दिखने के लिए भी टाइम नहीं है उसके पास। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंड इन टर्म्स ऑफ अनीश।
In terms of Bani, what has happened? Bani took over the responsibility of manufacturing one batch of fries and one ice cream. ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऑप्टिमाइज भी करना है. The idea of the entire restaurant is to serve people quickly. ठीक है, तो अब बानी क्या कर रही है? बानी 10 से लेके 10 2 तक. ठीक है, सो फॉर 2 minutes शी इज मैन्युफैक्चरिंग द आइसक्रीम. ठीक है, और ये 2 से लेके 5 minutes तक का जो टाइम है ना, वहां पे इधर ये फ्राइज बन रही है. पूरे ड्यूरेशन में फ्राइज आर गेटिंग मैन्युफैक्चर. तो अभी के लिए लिख लेते हैं, देन वी विल सी व्हाट ऑल इज द आइडियल टाइम यहाँ पे. अभी 10:05 को दूसरा कस्टमर आ जाता है. दूसरा कस्टमर आ जाता है तो बानी इज फ्री. सो नाउ बानी विल बिकम बिजी. बानी क्या करेगी? बानी अगेन विल हैव 2 minutes. तो 10:07 को उसने आइसक्रीम दे दिया होगा एंड 10:10 को दूसरे बैच ऑफ फ्राइज. तो ये पूरे के पूरे इसमें 10:10 को फ्राइज वुड हैव बीन डिलीवर्ड. तो दिस इज 10:10, 10 minutes पास्ट 10. ठीक है, अब ये हो जाता है. अभी बानी का भी काम हो गया है, अनीश का भी काम हो गया है इन अ वे. बट बानी वॉज डन विथ हर वर्क एट 7 minutes ना. 7 minutes को उसने आइसक्रीम दे दिया. अब फ्राइज को प्रिपेयर करने के लिए बानी को वहां पे बैठ के देखने की जरूरत नहीं है कि फ्राइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. सो बानी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द थर्ड क्लाइंट्स ऑर्डर बिकॉज द थर्ड क्लाइंट इज कमिंग एट 10:07. तो 10:07 को बिकॉज द थर्ड क्लाइंट इज कमिंग एंड बानी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द थर्ड क्लाइंट्स ऑर्डर एट 10:07 इटसेल्फ. उसको क्या करना पड़ेगा? उसको यहाँ पे 10:07 को स्टार्ट करना है ऑर्डर. एंड फ्रॉम 10:07 टिल 10:10 थर्ड क्लाइंट का ऑर्डर क्या है? 1 बर्गर एंड 1 फ्राइज है थर्ड क्लाइंट का ऑर्डर. ठीक है, सो 10:07 से लेके 10:17 तक बानी कैन वर्क ऑन दिस ऑर्डर. ठीक है ना, बानी इज वर्किंग ऑन ये वाला ऑर्डर. अब क्या होगा आगे जाके? अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो 10 minutes यहाँ पे इसका हो गया था, राइट? एंड दी सेकेंड दिस ऑर्डर बेसिकली नीड्स 1 portion ऑफ राइस. ठीक है, अब इसका 10:10 को काम खत्म हो गया है. बानी इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द बर्गर. दिस गाय विल इंश्योर कि भाई वो फ्राइज तो बना ले, या फिर बानी खुद भी फ्राइज बना सकती है बिकॉज फ्राइज डज नॉट टेक एनी मैनुअल इंटरवेंशन. ठीक है, सो इन दिस केस ये 10:10 से लेके 10:17 तक ना फ्राइज बन रहे हैं. And this guy is free now. Anish is free now because Bani is working on the burger. अभी 10:17 को क्या हो जाएगा? बर्गर भी रेडी है, फ्राइज भी रेडी है, क्लाइंट 3 has been served. Now both of them become free. So now what I'll do is I'll change the color. I will take this bluish greenish color and we'll try to see for what time, for how much time people are free here. अब A तो 10 minutes तक बिल्कुल फ्री नहीं था. ठीक है, बट 10 से लेके 10:17 तक ए फ्री है ना, बिकॉज ए डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू हियर. बिकॉज बानी इज वर्किंग ऑन द बर्गर एंड फ्रायर इज वर्किंग ऑन द फ्राइज. तो ए के पास तो कुछ काम नहीं है 10 से लेके 10:17 तक. तो यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं 7 minutes जब अनीश फ्री. बानी के केस में क्या हो रहा है? बानी यहाँ पे आइसक्रीम बना रही है, बट 2 to 5 जब फ्रायर चालू है उस टाइम पे बानी इज नॉट डूइंग एनीथिंग. अब 5 to 7 बानी आइसक्रीम बना रही है, मतलब शी इज वर्किंग ऑन समथिंग. बट 7 to 10 द फ्रायर इज फ्राइंग, राइट, इज मेकिंग द फ्राइज. बट बानी इज वर्किंग ऑन द बर्गर ना हियर. ठीक है, तो यहाँ पे यू विल हैव 3 minutes. सो इन टोटल लोग कितना टाइम के लिए फ्री हैं? 7 minutes अनीश इज फ्री एंड 3 minutes बानी इज फ्री. टुगेदर दे विल बी फ्री फॉर 10 minutes. दैट इज बेसिकली द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. 10:17 के बाद का जो एरिया है ना, उसमें दोनों लोग फ्री होंगे. उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही कोई फ्री है. सो द क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी मिनट्स इज एग्जैक्टली वन ऑफ द एम्प्लॉइज आइडल. और यहाँ पे ना बहुत अच्छा एक आंसर था, 23 भी दिया हुआ था. सो दैट इफ सम पीपल फॉल फॉर दिस ट्रैप दैट व्हेन आर एम्प्लॉइज फ्री, तो यहाँ पे भी तो 13 मिनट आ जाते हैं ना. तो 13 plus 10 would have given you 23, and some people might have marked this as well as the answer. But the correct answer here is 10. Now, if you look at the answers to the set, they are 10, 10, 10, 25, 10, 10, and 10. Right? So, lot of tens in this particular set. But it was not a very straightforward, easy, flowing set. ऐसा नहीं था ये, ठीक है? इसमें थोड़ा सा uncertainty था. So when I attempt these kind of sets ना, my mindset is I'm going to get two correct, two wrong. That is basically the mindset with which I attempt these sets. I don't attempt these sets with the mindset that I'm going to get 4 out of 4 or 3 out of 4. ये mindset से मैं जाता ही नहीं. ठीक है, आई नो दैट समवेयर आई एम गोइंग टू मिस आउट ऑन समथिंग, बट द आइडिया इज आई एम गोइंग टू गेट टू करेक्ट टू रॉन्ग. अब टू करेक्ट टू रॉन्ग का सिग्निफिकेंस क्या जाता है लाइफ के अंदर? इफ आई एम सेइंग टू करेक्ट टू रॉन्ग, आई एम एसेंशियली सेइंग दैट आई एम गोइंग टू गेट अ ग्रैंड टोटल ऑफ 4 marks फ्रॉम दिस सेट. अगर मुझे इस सेट में से 4 marks ही मिलने वाले हैं, हाउ मच टाइम शुड आई इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सेट? So let's say for example ये वाले context में my mindset is that I am going to get 40 marks in DRR. I'm just giving you a random example. ठीक है, अगर मेरे को 40 marks मिलने वाले हैं in 60 minutes in this particular DRR section, तो मेरे को 4 mark निकालने के लिए कितना time spend करना है? I have to spend 6 minutes ना. So once I have made up my mind that I am going to look at 4 marks from this, I should not be spending more than 6 minutes on this set.
तो ट्रेड ऑफ है, बिकॉज आई एम स्पेंडिंग 6 मिनट्स आई माइट मेक मोर मिस्टेक्स, बट देन अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग 4 मार्क्स फ्रॉम दिस सेट. कल को अगर मेरे पास टाइम बचता है, बाद में अगर मेरे पास टाइम बचता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई कैन कम बैक टू दिस पर्टिकुलर सेट एंड सी, अच्छा कहीं पे कुछ गलती तो नहीं की है, लेट्स रीचेक एंड ऑल दोस थिंग्स आई कैन मैनेज. बट इनिशियली तो आई शुड नॉट गेट इनटू सॉल्विंग इट बहुत ज्यादा डेप्थ में, कि 15 मिनट लगा के अगर मैं ये सॉल्व करूँ सेट, देन आई एम जनरली गोइंग टू बी इन बिग ट्रबल. ठीक है, दैट्स व्हाई बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू दीस काइंड ऑफ सेट्स. क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल पाथ में सॉरी, यू आर गोइंग टू हैव अ 50% काइंड ऑफ एन एक्यूरेसी इवन ऑन एन एवरेज डे. ठीक है, सो डोंट गेट ओवर एक्साइटेड एंड डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग थिंग्स जिसका बहुत ज्यादा आगे जाके आपको फायदा ना. राइट, now let's move to the second set. I'm assuming there are no questions, everybody was able to figure this out. Now, this was an annoying set, to be very honest. A study to look at the early learning of rural kids was carried out in a number of villages spanning 3 states. ठीक है, तो 3 states में rural kids के learning pattern के बारे में कुछ तो पता करना. अब 3 states कौन से थे? Chosen from the north east, chosen from the west, and chosen from the south. ठीक है, we'll go back to the red. 54-year-old kids. So 54-year-old kids each were sampled from each of the 150 villages from northeast. So northeast के 150 villages थे, उसमें से 54 ईयर किड्स को सैंपल किया गया था. ठीक है, मतलब टोटल कितना हो गया? 15 to 150, राइट? सो मेनी पीपल वेर देयर फ्रॉम दीज 150 विलेजेस नॉर्थ ईस्ट में से. 250 villages from the west and 200 villages from the south from S. ठीक है, तो 50 each from each of the 250 villages, 50 from each of the 200 villages. ऐसे करके यहाँ पे हमने सैंपल किया है किड्स को. Now it was found that of the 30,000 surveyed kids, कैसे 30,000? 50 multiplied by 150. So 50 multiplied by 150 is the kids from the northeast who were surveyed. 250 into 50, 250 into 50 rather, yeah, from the west and south में से 50 into 200. ठीक है, तो क्या बनेगा ये? 15 5 are 75, तो 7500, 5 5 are 25, so 2500, and 5 2 are 10, so 10,000. Sorry, 5 50 into 250 ना, so 1250, right? तो ये बना मेरा 30,000. So now 30,000 kids were surveyed by using this methodology. Fine. अभी यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें क्या हो गया? 55% of them studied in primary schools run by government. So G, government schools. 37 in private schools and 8 no school. So O. ठीक है, did not go to school. तो O डाल दिया वहां. The kids surveyed were further divided into two groups based on whether their mothers drop out of school before completing primary education or not. तो यहाँ पे जो kids हैं, kids इस kids को दो इसमें कर दिया. One, मदर्स जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के पहले ड्रॉप आउट किया था कि नहीं, तो ड्रॉप्ड आउट मदर्स एंड मदर्स हु फिनिश्ड कंप्लीटेड, लेट्स. ठीक है, सो जिन्होंने जो मदर्स ने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया था, वो मदर्स इज वन ग्रुप, एंड द अदर ग्रुप इज जो मदर्स ने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया एंड दे ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, दैट इज द अदर ग्रुप. The table below gives the number of kids in different schools, different types of schools for mothers who dropped out of. तो ये उनके बच्चे हैं जो ड्रॉपर्स थे. सो whoever whichever mother basically dropped out of school, ये उन बच्चों का सर्वे है, उनके बच्चों का सर्वे. ठीक है, now there is one very 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 basic thing which people generally forget in this kind of scenarios. ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि भाई 30,000 किड्स तो है, बट मदर्स कहाँ से आ गए करके. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी किड हैज वन मदर. ठीक है, तो जो 30,000 किड्स थे उनके ही 30,000 मदर्स होंगे. So it does not matter what we are talking about here. Both of them mean the same thing. Just that there are two types of mothers who are there. One who completed primary education and two who did not complete primary education, who dropped out of school. ठीक है, ये दोनों के बच्चे मिला के 30,000 बच्चे हैं. तो ये जो 7,000 बच्चे नॉर्थ ईस्ट में है ना, इसमें से कुछ बच्चे होंगे ऑफ द मदर्स who have finished their primary school, and there will be some mothers who would not have finished their primary school. And once you figure out which one is which one, you are done. फिर अभी एक बहुत ही अच्छा सा टेबल दिया हुआ है यहाँ पे. नाउ दिस टेबल यू कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स हियर. सो नॉर्थ ईस्ट में 4,200, 500, 300 ऐसे दिया हुआ है. सो यहाँ पे जो ड्रॉपर मदर्स थी, जो मदर्स थी जिन्होंने ड्रॉप आउट किया था, राइट, वो ड्रॉप्ड आउट ऑफ प्राइमरी स्कूल, उन लोगों के बच्चे जो थे ना, 5,000 सच किड्स स्लैश मदर्स वेयर देयर. अभी उनमें क्या हो गया था? 4,200 वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स, 500 ऑफ दीज किड्स वेंट टू प्राइवेट स्कूल्स, एंड 300 ऑफ दीज 5,000 मदर्स के बच्चे did not go to any school. Similarly 7,300 जो वेस्ट में थी मदर्स या किड्स, दोनों एक ही बात है. ठीक है, तो 7,300 बच्चे ऐसे थे जिनके जिनकी मदर्स ने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया था, who had dropped out of school.
7,300 मदर्स, ठीक है। तो वो जो 7,300 किड्स थे, उसके अंदर से 4,200 गो टू गवर्नमेंट स्कूल्स, 1,900 गो टू प्राइवेट स्कूल्स, 1,200 डू नॉट गो टू। सिमिलरली 5,700, ये टोटल मिला के बन जाता है 18,000। सो जो 30,000 किड्स को जो सर्वे किया था, उसमें से 18,000 किड्स की मदर्स हैड ड्रॉप्ड आउट एंड 12,000 किड्स की मदर वुड हैव स्टेड, ठीक है। तो 18,000 किड्स के मदर्स वुड हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ प्राइमरी स्कूल एंड 12,000 किड्स के मदर्स वुड हैव कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन, राइट। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इट मींस। ये समझ में आ गया तो द सेट इज वेरी इजी। अभी इसके आगे ना, देयर आर थ्री कंडीशंस दैट हैव बीन गिवन टू अस। एस के अंदर 60% ऑफ द सर्वेड किड्स वेर इन जी, गवर्नमेंट स्कूल्स में गए थे। जो एस के अंदर सारे के सारे बच्चे जिनको सर्वे किया था, वो सर्वेड किड्स, इट्स नॉट अबाउट हुज मदर्स हैड कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन और नॉट कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन। सर्वेड किड्स के 60% वेर इन जी। एस के अंदर ऑल सर्वेड किड्स हुज मदर हैड कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन वेर इन स्कूल। तो जिनके मदर्स ने भी प्राइमरी एजुकेशन किया था ना, वो सारे के सारे स्कूल में थे। नाउ दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड। In Northeast, among the O kids, मतलब people who did not go to school, 50% had mothers who had dropped out before completing primary education. ठीक है। तो जो भी किड्स को जो भी किड्स ओ थे, वो मतलब who did not study in any, who did not study in any school, उसमें से 50% had mothers who had dropped out before completing primary education. And last है the number of kids in G, government schools in Northeast was the same as the number of kids in G in West. ठीक है। So number of kids in G in Northeast was the same as the number of kids in G in West. तो वो दो चीजें सेम हो जाएगी। Now let's see what we will do with this. अभी यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पे पहले किया था, 54-year-old kids, ठीक है। 54-year-old kids were sampled from each of the 150 villages from Northeast. तो 15 to 150 मतलब 7,500 kids were surveyed from the Northeast. 250 into 50 मतलब 12,500 were surveyed from the West. And 200 into 50 मतलब 10,000 kids were surveyed from the South. This part we have already figured out कि कितने लोगों का सर्वे किया था। तो ये है सर्वेड और ये है ड्रॉप्ड आउट, ठीक है। सो दीज आर द किड्स हुज मदर्स हैड ड्रॉप्ड आउट। ये है टोटल सर्वे, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, दैट विल बेसिकली द पीपल, और दैट विल बेसिकली दोस विल बेसिकली बी द किड्स हुज मदर्स हैड कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो ये एक बेसिक अपने को मिल गया प्रेमाइस। अभी हमको देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे आउट ऑफ द 30,000 सर्वेड किड्स, आउट ऑफ द 30,000 सर्वेड किड्स 55% स्टडीड इन प्राइमरी स्कूल्स। तो सारे जो 30,000 बच्चे थे जिनको सर्वे किया था, उनका 55%, विच बेसिकली मीन्स 55/100 इंटू 30,000, ठीक है। तो ये जीरो कैंसल आउट हो गए। यू विल गेट 16500, ठीक है। सो 16,500 किड्स आउट ऑफ द सर्वेड किड्स वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स। 37% went to private schools. Again 37% of 30,000, सेम चीज करना है, 37/100 into 30,000, ठीक है। दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 37 3s are 111, सो 11100 यहाँ पे मिल जाएगा। एंड रिमेनिंग 8%, 30,000 का 8% इज 2,400, दे डिड नॉट गो टू एनी स्कूल। तो यहाँ पे 16,500, 11,100, 2,400, ये तीनों हमको मिल गए हैं। सो दीज थ्री विल बेसिकली बी द स्प्लिट बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड अदर्स। तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ। फाइन। नाउ विल गो टू द कंडीशंस दैट हैव बीन गिवन टू अस। अब ये सारे कंडीशन हमको दिए हुए तीन। 60% ऑफ द सर्वेड किड्स वेर इन जी, राइट, सर्वेड किड्स। अब एस के अंदर सर्वेड किड्स कितने हैं, 10,000, उसके 60% वेर इन जी। सो कैन आई से दैट दिस विल बी 6,000, ठीक है। सो दिस पार्ट विल बी 6,000 आउट ऑफ द 10,000 किड्स सर्वेड इन एस, 60% और 6,000 वेर इन जी। मोर ओवर इन एस, एस के अंदर ऑल द सर्वेड किड्स हुज मदर्स हैड कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन वेर इन स्कूल। तो क्या मतलब हो गया, अब ये है ड्रॉप आउट्स, ये है ड्रॉप्ड आउट मदर्स के बच्चे। और नीचे एक और टेबल अगर आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, वो होगा कंप्लीटेड मदर्स के बच्चे। अगेन साउथ होगा यहाँ पे। नाउ बिकॉज 5100, 300 एंड 300 आर डन हियर, और टोटल 10,000 थे, जिसमें से 5,700 आर किड्स ऑफ मदर्स हु आर ड्रॉप्ड आउट। 4,300 विल बी द किड्स ऑफ मदर्स हु वुड हैव कंप्लीटेड देयर एंटायर स्कूलिंग, प्राइमरी स्कूलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4,300 बन जाएगा। नाउ वन थिंग वी ऑलरेडी नो इज, ये 6,000 है, ये 5,100 है। तो टोटल किड्स हु वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स फ्रॉम साउथ वेर 6,000, बट उसमें से 5,100 बच्चे ऐसे थे जिनकी मदर्स हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल। तो इसका क्या कॉन्टेक्स्ट बनता है, जो बचे हुए 900 बच्चे थे ना,
वो ऐसी मदर्स के बच्चे होंगे हु हैड कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन. सो दिस बिकम्स 5100 प्लस 900 बिकम्स 6000. ये मिल जाएगा. नाउ वी ऑल्सो नो दैट एस के अंदर ऑल द सर्वेड किड्स हुज मदर्स हैड कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन वेर इन स्कूल. तो जिन भी मदर्स ने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया था वो तो सारे स्कूल में थे. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये पार्ट यहाँ पे, दिस वन, दिस विल बी जीरो. तो अगर कोई मदर ने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया है तो उसका बच्चा या तो गवर्नमेंट स्कूल में होगा या तो प्राइवेट स्कूल में होगा. ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दिस पर्सन डिड नॉट गो टू अ स्कूल. सो दिस इज व्हाट इज टोल्ड टू अस. अब मुझे ये पता है 5100 प्लस 900 ड्रॉप्ड आउट प्लस कंप्लीटेड विल गिव मी टोटल. अब यहाँ पे भी ड्रॉप्ड आउट प्लस कंप्लीटेड विल गिव मी टोटल. सो दिस विल बी 300 अगेन. फाइन. अब यहाँ पे अगर ये 6000 है, ये 300 है एंड दिस टोटल इज 10,000, ये बचा कितना? 10,000 माइनस 6,300. सो 3,700 बच गया यहाँ पे. सिमिलरली यहाँ पे ये 900 है और ये अगर 4,300 है, ये क्या बचा? दिस इज 3,400. फाइन. सो नाउ वी नो दैट साउथ के अंदर जो भी सर्वेड किड्स थे ना, उसमें से 6,000 वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स, 3,700 वेंट टू प्राइवेट स्कूल्स एंड 300 किड्स डिड नॉट गो टू एनी स्कूल एट ऑल. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट विल अंडरस्टैंड. अब इसमें से कुछ भी अगर समझ में नहीं आया होगा, प्लीज लेट मी नो. आई विल ट्राई टू डू इट अगेन एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू अगर कोई भी स्टेप यहाँ पे समझ में नहीं आया हो तो. बिकॉज दिस वॉज बेसिकली द स्टेटमेंट दैट कुड हैव क्रैक्ड द पर्टिकुलर सेट. तो ये स्टेटमेंट अगर ठीक से समझ में आ गया है एंड यू डिडंट गेट अनॉयड विद दिस स्टेटमेंट, आई एम श्योर यू वुड हैव बीन एबल टू क्रैक दिस पर्टिकुलर सेट. ठीक है, क्योंकि आगे बहुत ईजी हो जाता है. अब इन नॉर्थ ईस्ट, अमंग द ओ किड्स, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सारे के सारे ओ किड्स थे, 50% हैड मदर्स हु हैड ड्रॉप्ड आउट बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन. तो ड्रॉप्ड आउट, अब ये जो है ना 300, दैट इज बेसिकली 50%. सो 50% हैड मदर्स हु हैड ड्रॉप्ड आउट. तो अगर 50% 300, तो टोटल कितना बना? टोटल हैज टू बी 600 ना. नाउ डोंट पुट 300 हियर. दिस इज अ मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल मेक. यहाँ पे 300 डाल देते हैं, right? So it's not 50% of मतलब 50% of total is this. तो this and these are not equal. ये और नीचे वाला टेबल अगर बनता है तो that would have been 300. Fine. So 600 people are 600 kids were there. उसमें से 50% had mothers who had dropped out, and the remaining 50% had mothers who had cleared primary school. Fine. तो ये हो जाएगा. Now this is taken care of. This is taken care of. अब यहाँ पे the number of kids in G in northeast. So government in northeast X was the same as the number of kids in G in west. तो ये दोनों x x हो जाएंगे. तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? अभी ये 6,000 है, ये 16,500 है. दोनों के बीच का गैप इज 10,500. ठीक है, सो 10,500 को अगर मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, आई विल बी एबल टू फुलफिल बोथ ऑफ देम. सो दीज टू इक्वल पार्ट्स विल बी 5250 हियर एंड 5250. ठीक है, तो 5250 दोनों जगह पे अपने को मिल जाएगा. नाउ व्हाट एल्स विल वी गेट? इफ दिस इज 600, दिस इज 300 एंड द टोटल इज 2400, तो बीच का नंबर क्या आ जाएगा? 600 प्लस 300 इज 900. 900 प्लस व्हाट गिव्स मी 2400. सो द आंसर इज 1500. तो ये वाला भी सेल भर गया. अभी यहाँ पे दिस इज 5250 एंड दिस इज 600, तो दोनों मिला के 5850 हो गया, राइट? सो 5850 इज डन बिकॉज ऑफ दीज टू. बट द टोटल ऑफ दिस रो इज 7500, राइट? तो अब यहाँ पे इसका दोनों का बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बेसिकली बी द वैल्यू ऑफ p. सो 0 माइनस 0 इज 0, 10 माइनस 5 इज 5, 14 माइनस 8 इज 6 एंड 6 माइनस 5 इज 1. तो ये बन जाएगा 1650. Fine. So you can again cross check. 52 plus 16 is 68, 6,900 and 600 is 7,500. Similarly, यहाँ पे 5250 है and 1500 है. ठीक है, so now you have to just account for whatever is missing here. तो 1500 अगर इसमें से निकाल देते हैं तो I am left with 11,000. 11,000 में से 5250 निकाल देते हैं, I will be left with 5750. ठीक है, so again you can do it easily if you are very good at calculation. अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा. You can add these two. 5250 plus 1500 is 6750 and इसको निकालना है 12,500. ठीक है, so 0 minus 0 is 0, 10 minus 5 is 5, you will be left with 14 minus 7, that is 7, and 11 minus 6, that is 5. So 5750 is what you are going to get. अब ये टेबल पूरा का पूरा भर गया. सर्वेड वाला मिल गया, ड्रॉप्ड आउट वाला मिल गया, कंप्लीटेड वाला ऑटोमेटिकली मिल जाएगा because the difference between surveyed and dropped out is going to be completed. Fine. So if you are done with this, you would have done with you would have been done with the entire set. ठीक है, तो अभी जल्दी से देख लेते हैं. This is basically the table that we had filled. 50 to 50, 50 to 50, 6,000,
1650, sorry, 1650, 5750, 3700 एंड 600, 1500, 300। ठीक है, तो वैसे का वैसे पूरा का पूरा हमने फिल कर दिया। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस, विल बी एबल टू मैनेज एटलीस्ट टू क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर इजीली इन दिस केस। ठीक है, Gaja, we are working on something. We will definitely come up with something, and of course, I will be taking these sessions on a more or less daily basis. So, उसमें से I'm sure you will be deriving a lot of benefit. ठीक है, so we'll do something. Don't worry about. What percentage of kids from S were studying in P? Straightforward question. So S, total number of kids surveyed was 10,000. What percentage were studying in P? So 3,700. So 3,700 out of 10,000 were studying in P. So very, very, very easy question. You'll just cancel these out. You'll cancel these out. The answer is simply going to be 37%. Okay, so question 1, option A is the correct answer. In fact, if you look at the question that was there, यहाँ पे मतलब the entire thing, if you look at ना, 37% was in private schools overall, if you look at it. And if you look at the kind of expressions that we have got here, 1115, so 15% I think is here, and 55% is here, right? Or I'm missing something. 11 ones are, yeah, 15 is here, and 57% is here. So even ये दोनों को minus करके भी you could have got it, but the easier way is, of course, once the table is done, 3700 by 10,000, you will easily get your answer as 37% as well. ठीक है, fine. Let's go to the next one. I'm assuming this one everybody got. Second question एक बार देख लेते हैं. Among the kids in W whose mothers had completed primary education. ठीक है, तो अभी यहाँ पे W के अंदर whose kids had completed primary education, how many were not in school? So अभी जैसे मैंने बताया था, this is basically the mothers who had dropped out. These would have been mothers who would have been completed, and this plus this will give me surveyed, and we are only looking at West now. So सिर्फ West का देखेंगे यहाँ पे, ठीक है. So West is 5250, उसमें से 4200 are here, so the remaining 1050 should have been here. ठीक है, 5750 में से 1900 are here, so I can say 3850 are here. Again, if you are good at calculation, you'll be able to manage it very quickly. Otherwise also it's fine, don't worry about. एंड ये पूरा करने का जरूरत नहीं है वैसे, ऑनेस्टली डोंट नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स, यू जस्ट नीड द पीपल हु आर नॉट इन स्कूल. सो ये वाले आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. So 1500 people were there in the West who were surveyed and were not going to school, out of which 1200 were the ones whose mothers had dropped out of primary school. So the remaining 300 should have been the kids who would have completed, who were not in school in spite of their mothers having completed primary education. ठीक है, तो यहाँ पे यू विल गेट योर आंसर एज ऑप्शन ए 300. 1500 में से 1200 were children of mothers who had dropped out, so the remaining 300 will be children of mothers who had completed primary school. Fine, let's go to the third question now, this one. Now things become slightly different, and again ये this was basically what made it annoying, right? You have cracked the entire table, सब कुछ कर लिया, you put all the data there, you have happily got two questions and you are very happy about things, and suddenly now you have got more information. तो वो जो टेबल बनाया है, you would have probably made it something like this, इतना सा करके, something like this you would have made on your sheet of paper, and then suddenly you have to add something here, and then it becomes very annoying. ठीक है, and that I'm sure would have affected a lot of people during the test as well, and that disappointment is something which is a problem, right? So make sure that you're not disappointed. These kind of things will happen at the CAT, so go mentally prepared for that as well, right? In a follow-up survey of the same kids 2 years later, it was found that all the kids were now in school. अभी सब बच्चे जो थे ना, जो others में थे या O में आ रहे थे, O कैटेगरी में आ रहे थे, all of them are going to school now. Of the kids who were not in school earlier, so बहुत सारे regions थे ना, S एक region था, North East एक region था, and West एक region था. Of all the kids who were not in school earlier, कोई तो एक region में 25% went to the government schools and rest were enrolled in private schools. कोई तो second region में all such kids went to government, and third region में 50% of the kids went to government. ठीक है, so out of the people who did not go to school at all, some people would have gone to government schools, some people would have gone to private schools. कोई तो एक रीजन में 25% went to government schools of the people who did not go there, who did not go to schools earlier, बाकी 75% प्राइवेट में चले गए. कोई तो एक रीजन में सारे के सारे गवर्नमेंट में चले गए, एंड कोई तो एक रीजन में 50% went to government schools. ठीक है, एज अ रिजल्ट इन ऑल थ्री रीजन्स पुट टुगेदर 50% ऑफ द किड्स हु वर अर्लियर आउट ऑफ स्कूल हैड जॉइंड गवर्नमेंट स्कूल्स. अब ये सबका मिक्सचर करने के बाद ना, 50% ऑफ द स्कूल्स किड्स हु वर अर्लियर आउट ऑफ स्कूल हैड जॉइंड गवर्नमेंट स्कूल्स,
एंड बाद में ये पता चला कि कोई भी सर्वेड किड ने स्कूल चेंज नहीं किए थे, ठीक है. सो दीज पीपल गॉट एडेड टू दी स्कूल्स, बट हुएवर वेर गोइंग ऑलरेडी टू स्कूल्स, दीज पीपल डिड नॉट लीव एनी स्कूल. ये बताया गया है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द सर्वेड किड्स वेर इन गवर्नमेंट इन वेस्ट, ये पूछा गया है. तो अब एक बार देख लेते हैं. सो नाउ व्हाट वी हैव बीन टोल्ड हियर इज दैट, एक तो हमको ये पता है कि जो ओ वाले थे ना, ओ में वट एवर किड्स वेर देयर, दीज किड्स वुड हैव शिफ्टेड हियर. तो कैसे पता चला? 600, 1500, 300 मिला के यहाँ पे 2400 था इन द प्रीवियस स्लाइड, इफ यू लुक एट इट. तो ये जो टेबल था उसमें वी हैड दीज 600, 1500, 300 एंड 2400. वी हैव बीन टोल्ड हियर दैट all three regions put together 50% of the kids had joined government schools. तो जो 2400 है ना, उसमें से 1200 people would have joined government schools and 1200 people would have joined private schools. So that is basically the split that exists here. Now we know that in one of these regions 25% of the earlier population, ye population, would have joined government schools. In one of these regions 50% of the existing population who did not go to schools would have joined government schools. And कोई तो एक region ऐसा है जहाँ पे 100% of the people went and joined government schools. ठीक है. नाउ वी हैव टू फिगर आउट 600 में से 25% वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स, 50% वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स और 100% वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स. सिमिलरली 1500 में से 25% वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स, 50% वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स और 100 पीपल वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स, 100% पीपल वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल्स. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग एट हियर. नाउ वी हैव टू एलिमिनेट कि किसमें क्या पॉसिबल नहीं है, एंड देन इट विल बिकम वेरी इजी. अभी आई एम सेइंग दैट ओवरऑल 1200 किड्स हैव बीन एडेड यहाँ पे. अगर 1200 kids added हैं, can there be a possibility that 1500 का 100% would have gone here? Not possible ना. तो यहाँ पे 100% हो ही नहीं सकता, because if all these 1500 people go here, then this number goes about 1200. So this is definitely not 100%. This is either 25% or 50%. तो यहाँ पे थोड़ा सा सुडोकू लॉजिक आ जाता है. Fine. So this is the first interpretation that we have. Now we will look at what happens in each case. So 25% अगर 1500 के यहाँ पे जाते हैं, let's say for example, then what do we get? 1500 का 25% is what? 750 divided by 2 or 375. This is case 1. 50% go here, तो 750 यहाँ पे आ गए. This is case 2. Fine. Now ये हो गया. अभी इन दोनों को देख लेते हैं, 600 and 300. Now one of them has to be 100% and the other one has to be either 25% or 50%. ठीक है. Now tell me something. What happens in either of these cases? तो एक बार ये देख लेते हैं, and then we will be able to manage this very easily. So let's say for example there is ये वाला जो west वाला जो है ना, वो 25% है, पकड़ के चल लेते हैं. Let's say that this is the valid case. ठीक है. Now यहाँ पे 75 में this is ending and this is ending in 100, right? Now if this is 25%, one of these two will have to be 100%, the other one will have to be 50%. So one of these will be a multiple of 100 and the other one will have a 50 at the end. तो एक कोई तो 100 का मल्टीपल होगा और एक कोई तो 00 में एंड होगा और एक कोई तो 50 में एंड होगा, right? So one of them will end in 00, one of them will end in 50. Together these will end in 50 itself. तो अब ये 50 में एंड हो रहे हैं and this is ending in 75. The total can never end in 00. So our hypothesis that 375 would have been the case was wrong. And we know for sure that West में the percentage was 50. तो यहाँ पे 25% नहीं है, यहाँ पे 50% ही है. ठीक है. So that is what we know, which basically means that we have 750 here. Now again we have to ask ourselves the same question. Now we are left with 100% and we are left with 25%. I have to take 100% of something, I have to take 25% of something, and दोनों यहाँ पे add करके again this sum should be equal to or should end in two zeros. That is what we need. So in this particular context, 100% किसका लेना चाहिए, 25% किसका लेना चाहिए. If you take 25% of this, it will end in a 75, which will not give us the sum that ends in 00. So 25% has to be of this. So this will be 25%. And this will be 150. That leaves us with 100% of 300, which will give us 300. Total will become 1200. And that is basically how you are going to get 50 to 50 plus 150, 50 to 50 plus 750, and 6000 plus 300. And of course, trial and error will work even fine. Even similarly, it will work. But then again, I wanted to give you something scientific to think about. That's why I compared and contrasted those 25% and 100%. 50%, but mostly instinct से आ जाएगा. That 75 का last two digits, if you are able to figure it out, it will be very easy. Fine. So this is the thing that we are going to get as the final table
आफ्टर द कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, व्हाट नंबर ऑफ सर्वेड किड्स नाउ वेर इन जी इन डब्ल्यू। तो वेस्ट में गवर्नमेंट में कितने आते हैं, वेस्ट में गवर्नमेंट में कितने आएंगे, 5250 प्लस 750, दैट विल बेसिकली बी 6000। ठीक है, सो वेस्ट रीजन में गवर्नमेंट स्कूल्स में हाउ मेनी पीपल आर गोइंग, सो द आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज 6000। फाइन, दैट इज द आंसर। Again, let's move on to the last question now and let's see what happens. So again, the same thing. यहाँ पे the criteria has remained the same. So this entire thing has remained as it is. The question is, what percentage of the surveyed kids in S whose mothers had dropped out before completing primary education were in G now? ठीक है, what percentage of the surveyed kids in S whose mothers had dropped out were in G now? So mothers who had dropped out, वो वाले टेबल को मेरे को देखना है first thing, and I have to see the percentage of surveyed kids in government college. Fine, so that is what we have to look at. तो ये वाला है ना, दिस इज बेसिकली दी किड्स ऑफ मदर्स हु हैड ड्रॉप्ड आउट, ये है। अब इसमें एस देखने का है मेरे को, तो एस में ये 5700 है, दिस इज व्हाट वी नो। नाउ हाउ मेनी ऑफ देम आर इन गवर्नमेंट स्कूल्स, we know that all 300 of these people who are there 100% have gone to government schools according to the previous question. Now if 100% of these people have gone to government schools, we know that ये सारे के सारे, तो यहाँ पे तो we knew that these 300 were the same as these 300 because none of the kids, right, none of the mothers who had finished primary schools had kids who did not go to any school. ये दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, right? So these 300 kids whoever were there, everyone would have been transferred to the government school. तो यहाँ पे 5400 will basically become the number of people from south who were in government schools of mothers who had not completed primary education. And यहाँ पे you are going to get 5700 as the base. Into 100 करेंगे you will get your percentage. So we will get 3 से divide करेंगे, you will get 18 divided by 1800 by 19 is what you are going to get. If you look at the options, 94.7 and 93.4 are the two things. If you are good at the tables of 19, you will be able to manage it very nicely. And again, if you know that we are closer to 95%, तो भी चलेगा. But 19 nines are 171. You will be left with a 9. 90 is 90. 19 fours are 76. You will be left with a 140. 19 sevens are 133. So you are going to get your answer as 94.7. That is option A. So again, manageable question. You could have been able to do this. ठीक है, Monish, very good question. That was exactly what I wanted to address at the end as well. Monish has asked, should we attempt these type of questions in CAT? The last two questions seems fairly long. Yeah. So वहाँ पे I was telling you कि the amount of time that you're investing ना, that should be a function of something. So when I'm looking at a set, I will not look at the set and then start solving questions. I will look at the set, I will look at the questions, and only when both of them together make sense, तभी I will solve these kind of sets. ठीक है? So यहाँ पे you have to set your targets. You can't really go blindly and say that नहीं, I will solve all questions, all sets. That is definitely not going to happen for most of us. ठीक है? तो यहाँ पे set plus questions को combine करके I have to see. अभी ये वाले context में in the second set that we did, I knew that two questions were more or less directly solvable. ठीक है, from the data. So if you would have manufactured the table, you would have been able to solve this very easily. And two questions had additional information. ठीक है, now additional information basically means that you have to multiply the amount of time that you're solving this set by 0.5. So let's say for example you have aimed to solve one set in 12 minutes. That is your internal benchmark, which is a fair benchmark. ठीक है, 12 minutes you have thought of investing in one particular set, solving it end to end. अब यहाँ पे ये जो two questions है ना, इसमें you will more or less end up spending 8 minutes and the remaining 4 minutes will end up spending. अब 12 minutes मेहनत करके do you want to get 12 marks, which is a very good deal if you ask me, or 8 minutes invest करके you plan to get 6 marks and then you do invest your time somewhere else. Now that is a call that you have to take. ठीक है, so in my case what I will do is, because I've already invested time here and because this is an additional information that is that basically comes from the original condition itself, I would rather spend these 4 minutes and solve these additional two questions and get those 6 marks. क्योंकि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर हो रहा है. पहले मेरे को मिल रहे थे 6 marks in 8 minutes, now I'm getting 12 marks in 12 minutes. So instead of looking at another set and dealing with that ambiguity, I would rather invest 4 minutes on this set and try to get the other two as well. ठीक है, that is basically going to be my attitude towards this one. Of course, if after 2 minutes I'm struggling with this thing, I'll cut my losses and I'll move on to the next set. Fine. So always think in terms of minutes versus marks. So if you are expecting 40 marks in DI, let's say for example,
then you have to think about it in terms of 1 mark per minute. Now, if you come across a question जो एक critical path वाला question है, let's say for example, जहाँ पे I know that my accuracy is 50%, I am going to get two correct maybe, so I'm going to get 4 to 6 marks in that particular set. तो अगर मेरे को 4 से लेके 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, I would also want to invest 4 to 6 minutes in that set. I would not invest more than this much amount. Fine. And if I have time left in the end, only then will I come back. So it's going to be a function of marks per minute that you're expecting. And again, that will come once you have a judgment of the section कि भाई मतलब ये section जो है ना वो I think is more CAT 2017 slot 1 than CAT 2017 slot 2. And CAT 2017 slot 1 के अंदर out of the 8 sets that were there, even if you had solved 3 sets, I think it was a very good attempt, honestly speaking, from my perspective. So 36 marks would have been really good in 60 minutes. So now I'm saying that I'm ready to invest a lot of time, right? I'm ready to invest maybe almost 2 minutes per mark that I'm going to get. उतना मैं fight मारने के लिए तैयार. And that is basically how you should think. थोड़ा scientific होना चाहिए thought process. If you are doing that consistently, you will be able to get better. ठीक है? So whenever you're analyzing a mock, think from this perspective as well. And during the test, फिर subconsciously वो होगा. So your brain will tell you कि enough time has been spent on this one. Get out of it. Do something else. And that is basically the thing that you have to achieve. ठीक है. All right, so I don't think there are any doubts as such. If there are any doubts, do let me know in the comment section once the video is up, and I'll try to get back to you in case there is some step that you have missed, some step you are not understood, कहीं पे कुछ complication है, some strategic advice that you need, right? Anything that is there, please put it in the comments section. And again, for those of you who have joined us towards the end, who joined us in the second half, we are running this sequence, the series called the Daily Drill, wherein we look at past CAT questions and CAT level questions in the form of daily tests. So every day there will be a test that will go live, and tomorrow's test is already live. So reading comprehension is what we are going to do tomorrow. So tomorrow's test is already live. You can have a look at it. You can solve it, and we will be discussing that tomorrow in the evening. And every day in the evening, I'll come and discuss these questions that we had put in that particular test. So that way you will have a nice repository of questions and video explanations that you can have a look at a later point in time. That is basically the agenda. Okay, and we plan to do more than 100 sessions in this particular series. So, or 100 sessions is what we have planned for actively. So that is what we plan to do. So let's hope that all of you stay with us throughout the entire journey. You benefit from this entire initiative. And कुछ भी है तो let us know. In case you want to hear about something, there is some thought that you have that you would want us to implement, do let us know. And we will try to do it for all of you. And yeah, I'll see you again tomorrow with another session. This time we'll do RC. And yeah, I'll see you again tomorrow. So take care, everyone, and have a great evening ahead of you. I will just end this particular stream. All right. So thank